Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Black Ace Technologies. As in our previous video, we have learned about the introduction of Java, in which we learned about the history of Java, how the name originated, Java name originated, and some of the features of Java. In this particular video, we are going to discuss about the components of Java. Different components of Java are there, so we are going to discuss about the components of Java. Before starting, for those who are watching my video for the first time, I would like to request them to please subscribe the channel so that they can get the updates regarding the Java videos, and click on the bell icon also, and please do like and share and comment on the video if you like it. Okay, let's start the our video. So one of the major component of Java is JDK, which means Java Development Kit. This is one of the component of Java. JDK is the superset of JRE and some tools. It is a superset of JRE and some tools. JRE means Java Runtime Environment. When we run our code, when we compile and get the byte code, and I have told. So when we run our Java code, a environment is created, atmosphere type is created. If you say in the normal language, day-to-day language, atmosphere or environment is created. That is known as Java Runtime Environment. Okay, that is known as Java Runtime Environment. It consists of compilers, debuggers. These are the some tools to compile the code. Like Java code you have written, compile it, and then you will get the byte code which you will run. Debuggers are the tools which are used to check the errors that are in your Java program. कोई error है हमारे Java program में, तो वो सारी चीजें हम debuggers के थ्रू चेक कर सकते हैं. ठीक, कंपाइलर्स हो गया, आपने कंपाइल किया, उसको बाइट कोड में चेंज किया. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेडीके. जावा डेवलपमेंट किट का ये एक स्ट्रक्चर है कि क्या क्या चीजें कंटेन करती, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कंटेन्ड इन जेडीके. फर्स्ट इज हियर इन जीआरए वर्ड इज जेवीएम. JVM means Java Virtual Machine. It is not like a machine that you see or PC or desktop, not hardware type machine, but it is a virtual machine which is different for different platform. Okay, then it consists of set of libraries. Set of libraries means there are various set of libraries like math library, string library. In order to perform some mathematical operation, math libraries use. Means you want to perform quadratic equation, or you want to make a power over some variable. So for that, different this math library use, or for other function different libraries are used. That we will discuss further when we proceed to our more deep. Some other files are also there, like we have learned in previous issue. I have told about garbage collection and exception. So some other files are also there. That all comes under your JRE, Java Runtime Environment. Some development tools are there like Java, Java C. Means कोई हमें एप्लीकेशन डेवलप करनी है. लाइक जो हम एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम, कोई एप्लीकेशन हम जावा के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी टूल्स हम डेवलपमेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, द टूल्स विच वी आर यूजिंग, दैट इज ऑल्सो कंटेन इन जेडीके. वो सारे भी हमारे जावा डेवलपमेंट किट के अंदर ही आते हैं. बेसिकली जो मेन फंक्शनैलिटी है, द मेन फंक्शन ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, एज द नेम सेज, जावा डेवलपमेंट किट, इट इज यूज्ड टू फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन. इसमें जो भी टूल्स हैं उसकी हेल्प से हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर. इफ यू नीड, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के वीडियो वीडियो नहीं, आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोट्स टाइप में फॉर्म में चाहिए, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा. फ्रॉम देयर यू विल गेट द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द PDF file of
notes of this particular lecture. Okay, in the end I would like to say, if you like the video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक शेयर करें दूसरों से, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियोस आएंगी उस टाइमली अपडेट्स मिलते रहे. ओके, थैंक यू.